Okay. So, so why I'm focusing more on the object and fields and records every single day is that's the core of a Salesforce, correct? So you should understand what is mean by record, what is mean by fields and objects and tabs, everything, correct? So the things that we have discussing from the last 2 to 3 days consecutively, correct? So now the yesterday we discussed about how we can create the fields on the object, and before that we discussed how we can create the object. Now we know how to create the tabs, how to create the records. Now you guys are good to manage your databases. So this is we call as a database management even, correct? So on a Salesforce platform, there is a no separate database access. Everyone can get this. This is how we manage our records in the systems, correct? Our data in the system on the Salesforce platform, correct? So moving ahead, remember on the day 2, we discussed something called as a lead, something called as an account, contact, and opportunities. If you guys are able to recall, that's completely okay. If not, what we can do is I'll give you I'll give you a detailed overview of that today also, because that is something very, very important for us. Okay. So reason behind that, moving ahead, every single day, I'm going to use the terminologies lead, account, conversion, contact, opportunities, correct? So it's worth to pay the time to make the more attention on these terminologies. Okay. Now let's focus on that. Now let's understand what is mean by lead first. Okay. Let me switch to the sales app. Okay, so let me switch to the sales. So because we uses a sales app as our console, correct? And we are learning here sales cloud, correct? So sales is important for us. Now coming to the lead. Now what is mean by lead? So whosoever people work in a sales, they knows lead means what, correct? But for other people, lead means our customer, correct? So in the Salesforce terminologies, we never call the customer. Okay, so whether you are working in any domain, so you call your customer as a lead only. Okay, now lead, as I mentioned, lead is a standard object. So this is given by the Salesforce, correct? We are not going to create the object for the lead; it is already there. Okay, so how you can check the object? Go to this, go to setup, go to object manager, and then you can search for the lead. Correct? You see this? What is the label? Lead. What is the API name? Lead. And what is the type? It's a standard object. Correct? That is given by the Salesforce. If it's a custom object, it will be written as a custom object. And the API name will be lead underscore underscore. See that if it is a custom then. But right now, as we know, lead is a Salesforce standard object. Correct. Now, why lead is so important? A reason behind that, you need to understand every business starts from a customer and ends with the customer. Correct? That means every business starts with the lead and ends with the your leads only. Correct? Because in any business, customer is at a center. Correct? So that's why lead is important in a system. So there are some of the important fields also on the lead. Correct? So before that, let me open any one of the lead record and then show you some details. Correct? So whenever you open any record, we have to click on a detail section. Then only we can see the complete details of the customer. Okay. Now what these things are, we'll come to that one by one. Okay. For time being, just remember you have to see the details section. Okay. Every time whenever you open the lead. Okay. Moving ahead, let's discuss one field at a time. Okay. Now left side, let's take a lead owner. Correct. So whosoever person who creates the lead in a system, that will be the owner of your lead. Correct. Then the name, right now you can see my name. Reason behind, I created this lead. Correct. You create on your Salesforce platform, you will be able to see your name. Correct. Now we have the name. Name means what? The customer name. That means lead name. So now lead name is also divided into the two parts. So first name and last name. Correct. Name is equals to first name plus last name. Everyone knows this. Correct. Now the next thing is the company field. This is very, very important for us. Company. Now what this company field indicates that this person, Boxer, Bertha Boxer, is works with a company called as a Farmers Cooperative of Florida. Correct? Correct. So
company indicates that where your customer is working. Okay. Now the title, director of vendor relationship. Now what is meant by title? Title means the role of that person in the company. Okay. Now the next important field is the lead source. Okay. Now what is meant by lead source? Lead source means from which area or from which source this lead is coming into the Salesforce. Now it's not mandatory that every time you go to the lead and click on new button and create a record. Okay. Now you need to step up. Okay. Now in the Salesforce is integrated with your LinkedIn, with your Facebook, Instagram, your company website, and different areas. Correct. So for example, imagine that whenever, let's take an example of, I would say a good example will be Redbus. I guess Redbus or any booking website, correct? Okay. So here is the Redbus website. Okay. Now what happens now? Whenever you come over here, you book your tickets first time. Whenever first time you book your tickets or second time, the lead comes. So suppose Redbus and Salesforce is integrated with each other. We can integrate that. So whenever customer fill up the details, or we can, for more specifically, we can go any airline website. That will be very great. So airline. Go IBBO, I guess this is web. Okay, now here you can see this a very detailed. So what does it says? You come to the any flight booking website. What you do? You select your current city or the one-way or two-way round trip. You select your source. You select your destination. You pay the amount and you book your tickets. Correct. So what happens in that case? A lead can comes to your system. Okay, this is the one example. You go to the any car company website. Correct. Suppose you are interested to buy the car. Correct, and you go to the Maruti Suzuki website. I hope this will help us. Okay, here they will ask you for the details, correct? What they are asking, request a code, correct? So you select your state, you select your email address, you select your first name, last name, correct? Name is there, email is there, state, and other some details. You add your phone number, mobile number, everything, and you save. Now, what happening in the background, if suppose Maruti Suzuki is using the Salesforce, they will capture all this detail and send to the Salesforce, their corresponding Salesforce environment, and then the lead will be created in the system. Then for them, what will be the lead source? Lead source will be the web. What means web? Web means website. Now, what are the available options we have? So we have the phone inquiry, correct? So sometime it might possible, like I don't want to visit the website. I'll call the Maruti Suzuki showroom and there is a salesperson sitting and he picked up my call and he will ask me for some details and then he come to the lead tab, click on new button and create a lead in the system. So in that case, phone inquiry, correct? Then sometimes it's a partner referral. So Maruti Suzuki, they have their partners. They partner means what? They again sales employees only, but they're running in the market, correct? They moving. They are working in the local areas, and they will ask for the people to buy the car, correct? So the partner purchase list and some others. So here I can add the options as well. So now you know how to add the values in a pick list. Yesterday only we learned that. So what you will do, you will go to the lead tab, correct? You go to the fields and services, and you search for the lead source. Correct? Open the field. Now you know that how to add the values, correct? So suppose I want to add any one of the value. So I will click over here. Suppose now I want to add the Facebook as well. Facebook, correct? Suppose I want to add this value, what I will do, just save this. Correct. Now, if I refresh, Facebook will be start visible over here. Correct. So now this is way as per your own business, as per your custom business. So suppose it's a car company, you can give the lead sources related to car, website, Facebook, Instagram, LinkedIn, or your company website,
a phone inquiry, a salesperson, there is n number of possibilities from where the customer or even direct visit. Some people directly visit to the showroom, correct? A direct visit to showroom, like the way. So that what is mean by lead source? Lead source means the source where the actual customer is coming from, the source where from the actual lead is coming into the system, correct? Now this is we call as a lead source. Now what are the rest of the important field? The next one is the, you can rest of the check that fax is the definitely we can guess that it's a fax number for that particular customer. Email is the email of customer. Website, if that person has his own website, then he can write down his own website as well, correct? Now the next important field we have is the lead status. Now what is mean by lead status? Lead status indicates that where the current customer is standing, correct? What is the progress of on this current customer? So suppose we receive the customer today. So what should be the progress? What should be the lead status? It is open, not contacted, correct? Then what happens next? So our sales team will contact with them, correct? The people will contact with them. And then what happens? So the status will change to the working contacted. So the sales team then try to convince the customer. They try to sell the car to them, correct? And once they are ready to buy the product, that means they are ready to buy the car. And once the delivery is done to the customer, lead will be closely converted. And if the customer denied to buy the car, he went to the next showroom, he buy the different car, then for us, close, not converted, correct? So now, again, you can add your own values over here. Now you can do that, correct? So go to the lead status field. And as per your business need, so this is ideal for the car selling, correct? So now suppose someone is selling some sports instruments, correct? Sports, like a cricket bat, tennis bat, a ball, a stump, whatever it is, correct? A sports equipment, shoes and everything, correct? So for them, this is not the option, correct? For them, they will decide, oh, customer is coming, ready to buy the product. There can be the different possibilities, correct? So as per your business need, you can customize these values and you can customize all these fields. So if you want all the fields, you can keep them. If you don't want, you can remove them as well, correct? So lead is actually your customer. And there are the couple of fields that I mentioned you, the company and the status and the lead, I would say annual revenue, industry, source. These are the couple of important fields we can see over here, correct? Before going to the next, anyone have any questions coming to their mind? No, sir. It's a pretty straightforward. Okay, now let's jump to the next part. Now suppose imagine a scenario where a car showroom is there and you are selling hundreds and 500s of car in a day. Okay, now you remember what happens in that case if one person is managing everything. So it's not possible. He's gathering his own customer. He tried to sell the car, and after selling the car, he's trying to give the service as well. That is something not possible, correct? So that's why in industry we have the departments, correct? Sales department is different, a service department is different, I would say a marketing department is different, correct? So every department is different. Some people only manages the account, correct? Some people only manages the sales or service, correct? So how it will help? It will help to grow the business faster and to do the work efficiently, correct? Because suppose every single day I'm coming to my office and I'm trying to manage only the accounts. That means financial details and everything, correct? Managing the money. I'm expert in after a couple of days. But on the next day, someone asks me, oh, don't do this today. Try to sell the customers today, something. So that is not possible. So that's why we have the departments in a company, correct? So that the people will get expert and they are confident on their job. So they will do the better job, correct? So in the same case, for this purpose only, we divide the lead into the different section, correct? Now, what happens actually in the lead conversion? I'm saying the lead conversion is that you convert a lead. That means on a lead, there is a button, correct? A convert button. And the lead is divided. The lead is break into the account,
contact, and opportunity. 3 different object records are created then. Correct? You go to the lead, you click on convert button, correct? Then the 3 different records will be created. You see this account will be created, contact will be created, and opportunity will be created. Now, I hope you are able to understand why Salesforce is breaking the lead into the 3 different sections. How the account will help? Account will help to maintain that person's personal detail or maybe his company's detail. Correct? So, for example, means what? So, suppose that person, so we have his name here, Boxer, Bertha, correct? Bertha works for the Farmers Corporation. Correct. Now, here, imagine a scenario. Bertha is a senior executive employee for the Farmers Corporation, and Bertha is not purchasing the car for himself. He is purchasing car for this company. Now, you can scale up your scenarios, correct? Now, Bertha is a point of contact for the farmers company, correct? And he is connected with the Maruti Suzuki. Now, what is happening in this scenario is actually Bertha is a main point of contact. He is maybe buying 10 or 20 cars because he is buying the car on behalf of this company, Farmers Corporation. And from whom he is buying the car? From the Maruti Suzuki, correct? Now, here, 2 companies are involved, correct? One is the Maruti Suzuki company who is trying to sell the car, and the second company, that is Farmers Corporation, who is buying the car. But from the company on behalf, this is the point of contact. That is Bertha Boxer. Correct. Now, he is not buying the car for himself. He is buying the car for company. Now, in this case, it is a corporate deal. Correct. Company. Just give me 1 second. Sorry for the background. Actually, to work from home, so I hope you understand. Anyways, so now, as I mentioned, Bertha is buying the car on behalf of this company from the Maruti Suzuki. Correct. So this is not a individual deal. It's a corporate deal. So what happens in normally? So whether it's individual, so suppose whether it's a Bertha buying the car or Bertha on behalf of farmers company buying the car. So what happens normally is that whenever how the sales happens is basically whenever the Maruti Suzuki company has a feeling that this customer is buying the car, at least they get 20 or 30% of gut feeling now, so that he are based on certain criteria. I would say not the gut feeling. So they feels that this customer may buy the product, they will convert the lead. They will not keep the data everywhere in a single mode. They will spread the data in a different section. That means in the account, contact, and opportunity. So lead is converted into the account, contact, and opportunity based on certain criteria. So that some people say that if customer is interested 10%, we will convert the lead. Some people say that no, 10% is very less. If the customer is interested, shows the interest up to 50%, then only we will convert the lead. Correct. So every company have their own different scenario, or it's a just I would say ऐसे बोलते हैं ना कि knowledge to knowledge transfer होता है, person to person transfer होता है. मैं आपका senior sales employee तो मैं बताऊंगा भाई अभी ये मत convert कर, जब लगे कि ये थोड़ा सा एडवांस पेमेंट देने के लिए रेडी है तभी इसकी लीड कन्वर्ट करो, है ना? तो ये कहीं पे लिखा नहीं होता है, बट हाँ ये एवरी कंपनी का एक अपना खुद का सिनेरियो हो ही जाता है ना? तो लीड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द अकाउंट, कॉन्टैक्ट एंड अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन सर्टेन criteria, and criteria is different for every company, correct? So technically we cannot write down any criteria right now over here. Right now we can write down them, but right now not at this moment, correct? So what we will do, we will convert a lead into the account, contact, and opportunity, and then we will see how the data is broken. Okay, so now let's go ahead and convert the lead. Correct. Why we are converting the lead? We discussed, instead of keeping the data at a one place, let's spread the data across the teams so that teams can work individually. So account is the company's detail, that is farmers company's detail.
Contact is that the point of contact, that is Bertha, who is buying the cars on behalf of farmers company, and opportunity will store your financial details. Correct. So that's why you see this now data is broken into the different parts. So opportunity, finance team will manage, work individually. Contact means what? The sales team and the service team can work only on the contact, and account will store that company's detail for the future reference even. Correct. So that's why we broke the opportunity, sorry, we broke the lead into the account, contact, and opportunity so that different teams can work individually. So let's convert the lead. Let's click on convert. Now we are making sure that, oh, our customer is up to 10 or 20% interested. So that's why we are converting this lead. Now how to, let's click on control and open every record in a different tabs. Let's open the account first. You go to the details section. You see this detail? Who is the contact owner? Definitely it's my name because I'm converting this lead. Okay, because I'm even logged in. Who is the person? This is Bertha. What's his company? This farmers, and some other details, so that the mailing address is split, phone number is there, fax number is there. That's a contact details. Correct. Now let's go to the next tab, that is opportunity. Correct. On opportunity, you see the stages. The opportunity is still in prospecting. Correct. So that after we convert the lead, whatever the lead conversion is there now, that will be switched to the opportunity, where you can understand what is the current progress is going on this deal. Okay, not customer. I'm using the word a deal. Correct. Previously on a lead, we with the help of lead status, we monitor that what is happening with that particular customer, why he is not buying the product. And once he at least shown a 10% interest, we immediately convert that lead into the account, contact, and opportunity. And then the rest of the things will be managed from the opportunity to understand what's happening with that deal. Correct? Whether it's a prospecting, it's a qualifying, need some evaluation, and there are negotiation is happening, what's happening. And then the lead is, the deal is closed with the close won or close lost. Correct. So opportunity will store your financial details, your probability. You see this? How much is the probability to buy this customer the product? It's a 10%. Then you can, after some conversation, it will reach to 50. Then after 70, for example, and then it will be 100%. Correct. And we will close this opportunity. Now the last one. Now here is the first one, that is account. Sorry, I shown you the contact first. Account, you can see the annual revenue of this company. What is the company? Farmers Corporation's annual revenue is there. Okay, and some other details. So now lead is broken into the account, contact, and opportunity so that individual team can work independently. Okay, now anyone have any question? Why we are breaking the lead into the different records? Get for like separated job. You can say definitely that's the purpose now, because you on an opportunity you can see this. What is the probability? The probability 10%. Still we are converting that record lead. Reason behind, so opportunity will initially, there is nothing happening on the opportunity. Initially people will go to the contact, pick up their phone number, and try to convince the customer more and more and more. Correct. Once he is converted, they will every time. So initially it's prospecting. So then they will say that, oh, it's a qualified. He is qualified means what? He has enough money. He can take the cards. Then the next step will be need analysis. So this is again custom. As per our requirement, we can just change this path. Correct. And after the final stage will be negotiation. Correct. And after negotiation is done, we'll mark as a opportunity as a closely won or closely lost. Close won means successfully closed. Closely lost means somehow at the end we lost this customer. Correct. So that's the reason behind we break the lead into the account, contact, and opportunity. Now I hope you understand what is meant by account, what is meant by contact, and what is meant by opportunity even. So repeat. Opportunity will store your financial details. Just 1 minute. Opportunity will store your financial detail.
account will store that company detail, that the customer company's detail, or that individual customer's detail, and the contact will definitely store your contact details, the fax, phone number, email, and other things. Anyone have any questions now? Someone is saying something. Yes, so these things are like customized, or we can customize this. Like this is Everything is customized. Everything is customizable. दोस्त यहाँ पे These- ये जो भी दिख रहा है ना, आप यहाँ पे you लिख have सकते हो created step these 1, things, step 2, right? step 3. Right. And this activity details and contact, these four are the, like you told about the what we say, With हाँ, some of the fields are default mandatory, है ना, kind of default है. thing. जैसे Salesforce को भी पता है यार, कोई भी डील हो, प्रोबेबिलिटी तो बनता ही है, कितने % में ये कस्टमर इंटरेस्टेड है, उसकी स्टेज क्या है, उसको वो अपॉर्चुनिटी हमें कितने दिन के अंदर अंदर क्लोज करनी है. तो सम ऑफ द डिटेल जो है ना, वो फिक्स रहते हैं. लेकिन सपोज अभी आपने क्या किया ना, लीड पे अपना फील्ड बनाया XYZ, है ना, जब भी लीड कन्वर्ट होगी, वो फील्ड की वैल्यू आपको बस अपॉर्चुनिटी में डालनी है, अकाउंट और कॉन्टैक्ट में नहीं डालनी है. तो ये कर सकते हैं हम लोग, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो उसको बोलते हैं हम कस्टमाइजेशन. वो हम 1 by 1 आएंगे. तो यहाँ पे ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं है कि यही स्टेजेस होनी चाहिए, बट ये सेल्सफोर्स का स्टैंडर्ड है. सेल्सफोर्स हैज स्पेंड ऑलमोस्ट 25 years टू डिजाइन दिस फॉर्मेट. Okay, like you have customized this, that when converted will be clicked, this will divide into 3 part, like for different. No, use the proper terminology. Lead is divided into the 3 different records. Right, 3 different. You have just customized that. So this is not default one, right? This is also default. This is you go to the lead, you open any lead, and you see this convert button is already there. Even on your environment, it is, you can also see this convert button. So this is Salesforce standard functionality. Is that okay? Right. After that, we can fill the records and fill the fields accordingly. Yeah. Even if you wanted to change your opportunity name, American banking, and suppose I want to add the opportunities amount. Suppose it's a deal related to $5,000. And what will be the close date? Close date October 25. Correct. So these kind of details we can also add. There's no problem on that. Correct. So that means that you can just change the some name. You can some couple of details you can also change. No problem with that. And after that, even once you're done with this, then you can open your particular record. You can go to your opportunity or account. Where is your opportunity, man? Oh. Okay, where it is. You can go to that particular record and change the details as well. Anytime you can change the detail. No problem on that. Is it better now? Yes, sir. Anyone else have any question? So I don't think so. Here is there anything technical we are discussing? It's just the cells and it's just the terminologies we are discussing. Okay. So now what we have discussed is we understood what is meant by lead and when the account, contact, and opportunity is created, and what is the meaning and use of each and every object. What is the use of lead, account, and contact, and opportunity? Every single object have their own purpose as we described. Correct. So before going to the next question, anyone have any questions right now coming to their mind? No question. Fine, great. Okay, now let's come a little bit technical now. Correct. Now, as I mentioned, everyone. So did you try your trailhead? I need answer from everyone, one by one. Yes. Okay. What about the rest of the people? Yes. Okay. Yes. So if not yet, please, I would recommend you please go through the trailhead. Reason behind trailhead is the only thing that is indicating your profile to everyone. Okay, so make sure that you go with the trailhead first, because that is very important. Okay, now let me open the new slides. Then I'll share the slide. Now we have to reach 3rd slide. Okay, so I'll share. Let me check once what
Is there anything remaining? Opportunity. So whatever we're discussing, okay, just to give you a hint, whatever we are discussing now, that everything is already I have written over here. So whatever you see over here, it's not written anywhere from any book. Okay, this is the clear understanding of the concepts. Okay, this is a simple English written in a very simple format, and there is a no definition written over here. In a complete slide, there is a no definition. It's just the understanding. So even in interview, in a corporate life, whenever you are giving first interview, do not tell the definition, tell the concepts. Your interview will be clear. Correct? So you notice over here, definitely for some of the people, I added the definitions as well, but I recommend you to don't go with the definitions, go with the concepts. Correct? So I written over here what happens when we convert the leads. Correct? Now, what is mean by account? What is mean by contacts? What is mean by opportunity? Even how to navigate, how to create the new contacts. Everything is written. So one question is raised to my mind. Mhm. What if we converted the lead, right? Mhm. And we like we passed it to the accounts team and the finance team and then anyone. And what if Mhm. they close that time after converting them to three different perspective, and then it's closed. Like some of one of them, the account team doesn't make it to convert it as a closer. Then ना ना मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा आप क्वेश्चन फिर से बताइए ओके, सो आई एम ट्राइंग टू से कि अगर हमने लीड को कन्वर्ट कर लिया, राइट, तो फिर वो तीन जगह पे लाइक फॉर द थ्री डिफरेंट आई मीन रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड्स के लिए वो चले गए, फॉर द सेल्स, फॉर द फाइनेंस, फॉर द अकाउंट्स एंड द रेस्ट। तो अगर उस पोजीशंस पे कहीं डील खत्म हो जाती, डील क्लोज हो जाती, लीड कैंसिल हो जाती है मीन राइट, वी गेट बैक लाइक फॉर वापस से हमें आके चेंज करना पड़ेगा, और दैट पार्टिकुलर विल से कि दिस हैज बीन ब्रोकन। हाँ करेक्ट है आई मीन फिर वहीं पे सारा फंक्शंस खत्म हो जाएगा, लाइक दिस विल बी क्लोज्ड। हाँ डेफिनेटली ना तो वो जो आप बोल रहे हैं ना वो अपॉर्चुनिटी पे होगा तो अपॉर्चुनिटी पे मैंने जैसे दिखाया लेट मी ओपन द रिसेंट अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पे क्या होगा ना डिटेल्स में यहाँ पे लीड क्लोज हो जाएगी सेलेक्ट स्टेज यहाँ पे आता है आपको क्लोज वन और क्लोज लॉस्ट है ना तो आपके केस में ये क्लोज लॉस्ट हो रही है कस्टमर एंड मोमेंट पे सब कैंसिल कर रहा है ना तो हम क्या करेंगे स्टेज को क्लोज लॉस्ट करेंगे सेव कर देंगे तो ये देखिए ये रेड हो गया तो यहाँ पे जो भी कोई आएगा इसको समझ में आएगा लेट मी रिफ्रेश ऐसे क्यों ठीक है ऐसे ही होता है शायद ये यहाँ पे जो भी कोई बंदा देखेगा उसको समझ में आ जाएगा कि अरे ये तो कस्टमर की अपॉर्चुनिटी क्लोज लॉस्ट हो चुकी है तो हमें इससे फॉलोअप लेने की जरूरत नहीं है तो उस केस में होता क्या है देखिए सपोज ये नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए इस अकाउंट का इसको कॉन्टैक्ट कहाँ पे चला गया हाँ ये था देखिए सेल्स टीम या सर्विस टीम कहाँ से चेक करेगी ये आएगी यहाँ पे डिटेल्स में आएंगे है ना तो ये देखेंगे इसके इसके साथ मुझे टुडे आज फॉलोअप लेना है क्या हाँ लेना है इसका नंबर कहाँ पे यहाँ पे है बट बिफोर कॉलिंग टू कस्टमर व्हाट दे विल डू दे विल चेक दिस करंट कस्टमर स्टेटस कि एक है कहाँ पे है ना तो वो क्या करेंगे उसकी अपॉर्चुनिटी खोलेंगे और चेक करेंगे कि अरे ये तो क्लोज लॉस्ट हो गया तो ये जिसने भी क्लोज लॉस्ट किया है ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके किसी की भी अपॉर्चुनिटी क्लोज लॉस्ट करता है ना सबको अपने अपने रिकॉर्ड दिखते हैं अभी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का ओनर मैं हूं ना इसीलिए मुझे ये रिकॉर्ड दिख रहे हैं अगर ओके आप आके ओके यहाँ पे चेक करोगे तो हर किसी को हर किसी के रिकॉर्ड्स नहीं दिखते बिकॉज एवरी सेल्स पर्सन इज कॉम्पिटिटर टू ईच अदर है ना सेल्स में हमेशा कॉम्पिटिशन होता है कोई भी अपने कस्टमर्स के डिटेल दूसरे के साथ शेयर नहीं करता और ये भी सेल्स फोर्स में इसको बोलते हैं हम सिक्योरिटी मॉडल हम वो भी पढ़ेंगे कि हम अपने कस्टमर किसके साथ शेयर करने हैं वो भी हमारे पास कंट्रोल रहेगा और किसके साथ नहीं शेयर करने वो भी कंट्रोल रहता है तो डोंट वरी कोई भी किसी के कस्टमर को नहीं छेड़ेगा यहाँ पे सेल्स फोर्स में पूरा सिक्योर है तो ये लोग क्या करते हैं नॉर्मली कि जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट पे जाते हैं ये देखते हैं उसकी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी चेक करते हैं कि वेदर इट्स अ क्लोज वोन क्लोज लॉस निगोसिएशन में चल रहा है स्टिल क्वालिफाई हो रहा है उसके बेस पे सेल्स पर्सन उसको पिच करते हैं फोन नंबर तो उसको मिल गया बट पिच करने के लिए क्या बोलना है कस्टमर के साथ वो अपॉर्चुनिटी चेक करते कि उसकी अपॉर्चुनिटी की करंट स्टेज क्या है उसके बेस पे वो सब डील चलती है नाउ यू मे बी वंडरिंग लाइक आई हैव 10 कस्टमर्स और मे बी आई हैव 100 कस्टमर्स है ना तो हर किसी कस्टमर का नाम तो सेल्स वाले को याद रहेगा नहीं राइट तो उसके
उसके रिकॉर्ड्स कहाँ पे ढूंढेगा? वो ऐसे थोड़ी ना है, सपोज ये मैंने उसने क्लोज कर दिया, है ना, तो अब वो कहाँ पे ढूंढेगा? अब उसको क्या करना पड़ेगा? लेट मी डुप्लीकेट दिस। अब वो क्या करेगा? अभी इसी बर्था बॉक्सर की उसको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है ना, तो वो क्या करेगा? अपॉर्चुनिटी पे जाएगा। अब चलो मान लो यहाँ पे पहले दिख रही है तो उसको पता चलेगा। ऐसे भी हो सकता है कि बर्था बॉक्सर के 10 रिकॉर्ड्स मिल जाए, सेम नाम से भी लोग हो सकता है ना। तो उस केस में नई कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होती है जिसको बोलते हैं हम रिलेटेड लिस्ट, है ना। तो मैं इतने दिन से बोल रहा था कि डिटेल में जाओ और सारी डिटेल्स चेक करो। रीजन बिहाइंड रिलेटेड में जब आप जाते हो तो ये कस्टमर से रिलेटेड आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आपको कहीं पे जाके चेक करने की जरूरत नहीं है, आप बस वो कस्टमर को कॉन्टैक्ट ढूंढो, है ना, और उसमें आप उसकी अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। आप उसकी अपॉर्चुनिटी पे नए टैब में ओपन करो, मिल गई अपॉर्चुनिटी इजीली। तो आपको कहीं पे जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है ना। तो फिर से आप डिटेल में जाओ। अभी मुझे इसका अकाउंट चाहिए। ये अकाउंट क्या है? ये कौन सी कंपनी से बिलोंग करता है? यहाँ पे देख रहे हो आप, अकाउंट के लिए भी एक हाइपरलिंक एडेड रहता है। आप अकाउंट पे क्लिक करो, आपको अकाउंट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और आप अकाउंट पे अगर चले जाओगे तो आपको अकाउंट के रिलेटेड लिस्ट में आपको उसका कॉन्टैक्ट भी मिल जाता है और उसका अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। तो एवरीथिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? अकाउंट से स्टार्ट होता है। तो नॉर्मली पीपल क्या करते हैं ना, सेल्स में जब काम करते हैं तो वो लोग अकाउंट को ओपन करते हैं। तो अकाउंट क्यों ओपन करते हैं, कॉन्टैक्ट और अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं? तो आपको बिजनेस समझना पड़ेगा दोस्तों। रीजन ये है कि जो डील्स होती है ना, वो इंडिविजुअल्स के साथ होती है या फिर कंपनीज के साथ होती है, करेक्ट, है ना। तो अकाउंट तो एक मिनट है दोस्तों, ए बाहर जा खेळायला। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि देखिए, हमने जैसे डिस्कस किया था, जो भी कंपनी है, जो भी बायर है ना, वो क्या होगा? एक तो इंडिविजुअल पर्सन होगा, सपोज सुनील बाय कर रहा है या फिर अभिषेक बाय कर रहा है कार, या फिर क्या होगा, ऑन बिहाफ ऑफ XYZ कंपनी अभिषेक इज बाइंग द कार, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है ना, वो लोग स्टार्ट अपना अकाउंट से करते हैं। तो वो जाएंगे और अकाउंट चेक करेंगे, ओ मेरे पास आज फार्मर्स कंपनी की जो डील है उसके साथ डील करना है, इन्फोसिस के साथ डील करना है, दिस दिस पर्सन इज देयर, इसके साथ डील करना है, IBM कंपनी के साथ डील करना है, अमेजोन के साथ डील करना है। यहाँ पे और कुछ थोड़े बहुत नाम आएंगे, इंडिविजुअल के भी नाम आ सकते हैं, सुनील आएगा, अभिषेक आएगा, नितिन, निखिल, जो भी नाम से इंडिविजुअल्स के, उनके साथ भी मुझे डील करना है। तो वो लोग क्या करते हैं, सपोज फर्स्ट टाइम होता है उनका काम, एक कंपनी का डिटेल ओपन करो। ओके, तो ये कंपनी की अभी सिचुएशन क्या है, फोन नंबर कंपनी का ये है, फैक्स नंबर ये है, तो इनको यहाँ पे डिटेल्स मिल गए। बाद में ये लोग क्या करेंगे, लेट्स सी वेयर इज द अपॉर्चुनिटी स्टैंडिंग। तो ये अकाउंट के रिलेटेड में जाते हैं और उसको अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी का करंट स्टेटस क्या है ना। तो यहाँ पे एक नेक्स्ट टैब में अपॉर्चुनिटी ओपन कीजिए। तो यहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी के डिटेल्स मिल जाएंगे, है ना। सपोज निगोशिएशन है, जो भी चल रहा है, अब वो उनको दिख गया। लेट्स इमेजिन इट्स अ क्वालिफिकेशन, है ना। तो वो लोग क्या करेंगे, स्टिल इट्स इन क्वालिफिकेशन स्टेज, वो लोग अभी कस्टमर को कॉन्टैक्ट ओपन करेंगे। कॉन्टैक्ट से नंबर उठाएंगे और उसको कॉल करेंगे। तो नॉर्मली सेल्स ऐसे स्टार्ट होता है। तो सेल्स कॉन्टैक्ट या अपॉर्चुनिटी से स्टार्ट नहीं होता, मेन ऑब्जेक्ट होता है अकाउंट। तो अकाउंट के रिलेटेड लिस्ट में आपको उसके कॉन्टैक्ट्स और अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इज इट क्लियर नाउ द प्रोसेस? Yes, sir. ओके, तो नाउ ऐसे सोचिए कि ये फार्मर्स कॉर्पोरेशन ने ये साल को 10 कार बाय कर ली, है ना। तो नेक्स्ट साल ऐसे हो सकता है कि उनको और 15 कार की नीड है। तो उस केस में क्या होगा, उनके लिए एक और कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो इस टाइम पे वो लोग लीड नया से नहीं बनाते, वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग अकाउंट्स में आते हैं, पहले अकाउंट में सर्च करते हैं कि फार्मर्स के लिए कोई एग्जिस्टिंग अकाउंट है ना। अगर उनको एग्जिस्टिंग अकाउंट मिल जाता है तो वो क्या करेंगे, सपोज बर्था बॉक्सर सेम पर्सन कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो इसी से बात चलाते हैं। अगर नहीं है, सपोज बर्था बॉक्सर ने ये फार्मर्स कंपनी लीव कर दी, लेफ्ट हो गया वो, तो ये लोग क्या करते हैं ना, कॉन्टैक्ट पे यहाँ पे अकाउंट के रिलेटेड लिस्ट में आते हैं और नया कॉन्टैक्ट बनाते हैं।
है ना. सपोज दिस टाइम हु इज द कॉन्टैक्ट पर्सन, सपोज जॉन. जॉन विक, है ना. उसका कॉन्टैक्ट नंबर होगा समथिंग एल्स, है ना, और वो इसको सेव कर देंगे. तो ये क्या हो गया, एक कंपनी के साथ में दो कॉन्टैक्ट पर्सन भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, जितने डील चल रहे हैं उनके अलग अलग कॉन्टैक्ट भी हो सकते हैं और उनके अलग अलग अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती है. तो यहाँ पे आके वो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज भी बना सकते हैं, है ना. यूएस की है, जर्मनी है, इंडिया है, कोई भी अपॉर्चुनिटी होती है तो वो बना लेते हैं. तो यहाँ पे आके आप रिलेटेड लिस्ट में आके उस कंपनी से रिलेटेड नए नए डील्स के डिटेल्स सेव कर सकते हो. तो डील 1 था 10 कार का, उस टाइम पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था बॉक्सर. डील सेकंड हो गया जॉन विक, उस टाइम पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जॉन विक हो गया. ऐसे काम चलता है. तो ये सेल्स का पार्ट है ना. तो नॉर्मली हमारा पेरेंट ऑब्जेक्ट कौन सा है, जब भी लीड कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद हमारा पेरेंट ऑब्जेक्ट होता है अकाउंट, और उसके बाद होता है कॉन्टैक्ट, और उसके बाद होती है अपॉर्चुनिटी. तो ये लेयर बाय लेयर नहीं है, वन पेरेंट है और दो चाइल्ड है ऐसे मान लीजिए. उसका कॉन्टैक्ट भी चाइल्ड है और अपॉर्चुनिटी भी चाइल्ड है, और ये तीनों के तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं. अभी कोई क्वेश्चन है किसी के माइंड में? नो क्वेश्चन. ओके. Now we understood that how account is the parent and how the contact and opportunity is in related to account. करेक्ट. ये तो अभी हमने यूआई पे देख लिया, है ना. ये अभी हमने सब यहाँ पे पेजेस पे यूजर इंटरफेस पे देख लिया. लेकिन टेक्निकली ये सब कैसे हो रहा है, टेक्निकली भी हमें सोचना, किसी ना किसी ने तो इसको डिजाइन किया होगा ना, सेल्सफोर्स पे है. तो नेक्स्ट पार्ट ये है कि ये अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट एंड अपॉर्चुनिटी एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है वो हमें सीखना है. उसको कैसे कनेक्ट करते हैं वो हमें सीखना है. समझ में आ रहा है कि लेयर कैसे अप हो रहा है हमारा. पहले हमने क्या सीखा, पहले हमने बिजनेस सीखा, पहले हमने ये सीखा कि लीड क्या होता है, अकाउंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी क्या होती है, ये हमने सीखा, है ना. उसके बाद हमने ये सीखा कि ये अकाउंट है. अकाउंट मतलब है कि कंपनी हो सकती है, इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है ना. इंडिविजुअल पर्सन है तो उसने एक कार बाय कर दी, उसका तो खत्म हो गया, इज एन इंडिविजुअल पर्सन. लेकिन अकाउंट अगर कंपनी है तो इस साल वो लोग 10 कार बाय करेंगे, on behalf of that company one person is the contact person. बट नेक्स्ट साल उनका कोई अलग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा. लेकिन इस साल के लिए अपॉर्चुनिटी जो थी वो अपॉर्चुनिटी वन थी, जो सपोज $10,000 में क्लोज होगी. नेक्स्ट साल नई अपॉर्चुनिटी बनेगी. अपॉर्चुनिटी मतलब नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, अपॉर्चुनिटी मतलब एक क्या बोलते हैं हम लोग, अपॉर्चुनिटी मतलब तो अपॉर्चुनिटी होती है. हिंदी में वर्ड मुझे नहीं पता अपॉर्चुनिटी को क्या बोलते हैं. संधि जो मराठी में बोलते हैं, या फिर एक आपको नया चांस मिल रहा है ना, उसी को मौका. बोलते हैं. हाँ, मौका, है ना. एक पहला मौका ये था कि 10,000 डील क्लोज कर दी. नेक्स्ट टाइम पे मौका ये मिलेगा, या फिर नेक्स्ट टाइम पे अपॉर्चुनिटी क्या होगी कि आप $20,000 की अपॉर्चुनिटी क्लोज कर दो, $20,000, है ना. सो दिस वे अकाउंट, कॉन्टैक्ट एंड अपॉर्चुनिटी वर्क्स हैंड इन हैंड, दे आर लिंक्ड विथ ईच अदर, है ना. ये हमने सीखा. तो कस्टमर सीखा क्या होता है, कन्वर्ट क्यों करते हैं वो भी हमने सीखा. उसके बाद हमने क्या सीखा कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है तो हर एक का मीनिंग क्या है. ये सब अभी हमने बिजनेस लेवल पे सीख लिया. लेकिन ये हमारा काम है क्या एक्चुअली, इसमें से एक भी हमारा काम नहीं है दोस्तों. हमारा काम क्या है कि ये इन सब चीजों को टेक्निकली कैसे कनेक्टेड हो रहा है ये सब. तो हमने 2-3 दिन पहले से क्या अंडरस्टैंड करा, ये टैब्स कैसे आते हैं, रिकॉर्ड्स नए कैसे बनाते हैं, फील्ड्स कैसे बनाते हैं, ये डिटेल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, है ना. तो ये क्यों दिख रहे हैं, ये सब हमने चेक किया था. मतलब हमने नए नए फील्ड्स बनाए, उनके टाइप्स बनाए. लेकिन अभी हमें वही नेक्स्ट लेवल अप करना है. हमें ये सीखना है अभी कि अकाउंट जो है ये कॉन्टैक्ट और अपॉर्चुनिटी के साथ कैसे लिंक्ड है ना. अभी हमें यूआई से दिख रहा है कि ये अकाउंट पे ये अपॉर्चुनिटी, ये कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे रिलेटेड में आ तो रहा है, बट यहाँ पे क्यों आ रहा है, ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए कि ये एक दूसरे के रिलेटेड में आने लगे. यहाँ पे वर्ड भी देखिए रिलेटेड यूज किया है ना. ये क्यों एक दूसरे से रिलेटेड हो गए. अभी हमें एज ए इंडिविजुअल पता है कि इसी लीड थी, ये लीड को आपने कन्वर्ट कर दिया तो ये अकाउंट, कॉन्टैक्ट और अपॉर्चुनिटी एक दूसरे से रिलेट हो गए, है ना. ये यूआई लेवल पे समझ में तो आ गया. अभी ये टेक्निकली कैसे हो रहा है, ये नेक्स्ट चैलेंज है हमारा. सो
You guys are ready? So can we start with that? Yes, sir. Okay. This is not what I'm expecting. 1% is saying yes. At least, Yes, guys, sir, yes. respond. Show some energy. It's a early morning, 8 o'clock, just 9 o'clock. That's okay. है ना? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बताइए, मैं रिपीट करता हूँ. लेकिन आपको इंटरैक्ट करना होगा, है ना? तभी मैं आपको, जब जब तक आप इंटरैक्ट नहीं करोगे, मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें नहीं बता पाऊंगा. क्वेश्चंस पूछिए प्लीज. एनीवेज, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. The next part is that how we can link two objects together. है ना? यहाँ पे आप देखिए, अकाउंट, कॉन्टैक्ट और अपॉर्चुनिटी, तीन ऑब्जेक्ट एक दूसरे से लिंक्ड है. तीन तीन पे हम बाद में आते हैं. पहले हम ये करते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट करना है ना? तो वो हमें अभी हम नेक्स्ट चीज सोचेंगे. देखिए, अभी क्या होता है, एक सिंपल मैं आपको सिनेरियो देते हैं. ये अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, ये सब बाजू हटाइए. ठीक है, एक सिंपल सिनेरियो पकड़ते हैं, है ना? दो दो चीजें अगर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो वो कैसे कनेक्टेड होती है? 1 to 1 कनेक्टेड होती है ना? एक से एक कनेक्टेड होता है, या फिर एक से मल्टीपल कनेक्टेड होते हैं, है ना? सो we can create 1 to 1 relationship and 1 to many relationship in a Salesforce, है ना? तो फॉर एग्जांपल, एक कार के साथ एक ही इंजन आता है. एक कार में कभी दो इंजन नहीं होते, लेकिन एक कार के अंदर मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, तो वहां पे 1 to many रिलेशनशिप आता है ना? तो 1 to many और 1 to 1 ऐसे दो चीजें कनेक्ट होती है ना? तो हम अभी अंडरस्टैंड करेंगे 1 to many कैसे कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से. तो एक रिकॉर्ड के साथ दूसरे ऑब्जेक्ट के मल्टीपल रिकॉर्ड्स को कैसे कनेक्ट करें. नाउ व्हाट इज द एग्जांपल फॉर दिस? वन स्कूल, मल्टीपल स्टूडेंट्स. वन कार, मल्टीपल कार पार्ट्स, है ना? वन कंपनी, मल्टीपल एम्प्लॉइज, है ना? तो यहाँ पे क्या है कि 1 to many रिलेशनशिप है ना? आपको अभी यहाँ पे नोटिस होगा, एक अकाउंट है, लेकिन हाउ मेनी अपॉर्चुनिटीज आर देयर? सॉरी, हाउ मेनी कॉन्टैक्ट्स आर देयर? 2 contacts are there. That means 1 to many. I can create as a 3, 4, 5 number of, है ना? तो यहाँ पे क्या है, एक अकाउंट, मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स, एक अकाउंट, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज. सो व्हाट्स द रिलेशन ओवर हियर? 1 to many. समझ में आ रहा है? तो चलो एक और रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं. Single airport and multiple airplanes, single airport, multiple passengers, a single bus, multiple passengers, one school, multiple students, है ना? तो आप सिंगल यूनिवर्सिटी में जाते हो, तो आपको वहां पे मल्टीपल स्टूडेंट्स दिखते हैं. सिंगल स्टूडेंट्स हैं, तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स वो पढ़ रहा होता है ना? तो हमें यहाँ पे वही सब डिजाइन करना है ना? तो यहाँ पे आपको दो ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, और वो दो ऑब्जेक्ट्स को बाद में हम एक दूसरे से लिंक करेंगे 1 to many रिलेशनशिप में. तो तब आप क्या करोगे? सपोज आपने ये कर लिया कि आपने बस का रिकॉर्ड बना लिया, है ना? आप क्या करोगे? बस 1 पुणे टू मुंबई, बस 2 मुंबई टू दिल्ली, है ना? तो आप ऐसे रिकॉर्ड्स बनाओगे. लेकिन आप सपोज आपने पहले बस का रिकॉर्ड बना लिया, मुंबई टू पुणे, एंड देन उसके अंदर आपको पैसेंजर्स इंसर्ट करने, है ना? तो पैसेंजर्स 1, पैसेंजर 2, पैसेंजर 3, ऐसे उनके नाम होंगे. तो आपको वहां पे दिख जाएगा एक बस के अंदर मल्टीपल पैसेंजर्स है. तो ऐसे 1 to many रिलेशनशिप सेल्सफोर्स में क्रिएट किए जा सकते हैं. तो उसको बोलते हैं हम लुकअप रिलेशनशिप. द नेम इज द लुकअप रिलेशनशिप. आप बस कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कीजिए. उन दो ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करना बहुत इजी है, बहुत इजी है. बस आपको एक फील्ड बनाना है, कुछ नहीं करना है. बस आपको आपको पता है फील्ड कितना इजीली बन जाता है ना? तो आपको एक फील्ड बनाओगे ना, तो वो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे. इतना सिंपल है. बट उसके लिए आपको ये सब थियरी समझनी पड़ेगी. ठीक है, तो नाउ लेट्स टेक नाउ अभी बताइए, कोई एग्जांपल एक बता सकते हैं 1 to many रिलेशनशिप का? कोई भी एग्जांपल आप बता सकते हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. एनीवन? One company, many employees. Okay, I think I taught you that already, because I already have those objects, right? Company name. One printer and multiple system to work on. हाँ, ये हो सकता है, बट ठीक है, ठीक है. थोड़े से उसमें बहुत ज्यादा सिनेरियो आ जाएंगे. एक कंप्यूटर और उसके मल्टीपल पार्ट्स हो सकते हैं, है ना? प्रिंटर आई नो मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट होता है, बट वहां पे थोड़ा सा अलग सिनेरियो है. हाँ, ओके, कंप्लीटली ओके. तो हम बना सकते हैं कार और कार पार्ट्स, बाइक एंड बाइक पार्ट्स, और टेलीविजन एंड टेलीविजन पार्ट्स,
टेलीविजन के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, है ना? तो ऐसे भी कोई सिनेरियो बता सकते हैं। एनीवन एल्स, एनी सजेशंस? ये ऑब्जेक्ट्स को छोड़ के इसको आप मत यूज कीजिए कि कार पार्ट्स, बाइक, मोबाइल, ये सबको मैंने यूज कर लिया ऑलरेडी। एनीवन एल्स? सो वन गैलेक्सी एंड मल्टीपल प्लैनेट्स। ओके, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं इतना भी नहीं चाहिए हमें, गैलेक्सी एंड ऑल दैट स्टफ, है ना? तो लेट्स टेक ए सिंपल एग्जांपल, Marvel and टेलीविजन। superheroes. हाँ, रहने दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो, that's a part of joke. Let's take a simple example, a television and television parts. हाँ, तो एक टीवी सेट के अंदर टीवी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे उसका पावर का पार्ट अलग होता है, स्क्रीन होता है, ट्रांसफार्मर होता है, उसके अंदर छोटा सा मदरबोर्ड होता है, एंड नंबर ऑफ थिंग्स होती है। तो हमारे पास क्या होगा कि दो अलग अलग ये रहेंगे। आज थोड़ा सा दोस्तों 5-10 मिनट एक्स्ट्रा होने वाला है, ठीक है? सो बी प्लीज पे द अटेंशन, 2 मिनट का काम है बस बचा हुआ, है ना? तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हम बनाएंगे, वन होगा टेलीविजन और दूसरा होगा टेलीविजन पार्ट्स, है ना? तो पहले हमें वो करना है, तो मैं क्विकली दो ऑब्जेक्ट्स बना देता हूं ताकि हम उनको कनेक्ट कर पाए, है ना? तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं वो भी आप सीख लीजिए एक बार फिर से। गो टू सेटअप, गो टू ऑब्जेक्ट मैनेजर and create a custom object. Okay, so what will be your first object name? Television, है ना? Plural name television ही होता है, yes, televisions नहीं होता है। Okay, object name television and record name television name, है ना? So save, that's it. इतना सिंपल है ऑब्जेक्ट्स बनाना, करेक्ट? नाउ दूसरा ऑब्जेक्ट हमें कौन सा बनाना है? टेलीविजन पार्ट्स। कस्टम ऑब्जेक्ट अगेन वन मोर टाइम, टेलीविजन पार्ट्स, इसका प्लूरल भी वही होगा, टेलीविजन पार्ट्स, एंड देन सेव। तो अभी हमने क्या कर दिया, दो दो ऑब्जेक्ट्स क्विकली बना लिए। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमने ऑब्जेक्ट्स तो बना लिए, लेकिन आपको यहाँ पे दिखेंगे क्या ऑब्जेक्ट्स? यहाँ पे क्या कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा? नहीं दिखेगा। रीजन बिहाइंड, उसके लिए हमें टैब्स बनानी पड़ती है अलग से। अभी कुछ लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम पे भी वो जो टैब बनाने का ऑप्शन आता है वहां से बना लिया टैब, इट्स वेरी गुड, वहां से भी आप बना सकते हो। लेकिन मैं सिंपल सिंपल ऑप्शन बताता हूँ। आप टैब में आइए, यहाँ पे विजिट टू द टैब सेक्शन, click on tabs, let's create a new tab for the television and television parts. First object will be television, correct? Select some style, है ना? टेलीविजन का सिंबल होता है गेस, हाँ ये है ना, CRT TV। Click on next, keep the default on, next, and then save, है ना? एक टैब तो बन गया। लेट्स डू द नेक्स्ट टैब, एक और टैब बनाते हैं कस्टम टैब में, देन होगा टेलीविजन पार्ट्स। सर्च कीजिए। तो ये वाला पार्ट कोई तो सिंग बार उठा लेता हूँ मैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट, एंड सेव, है ना? तो हमने दो टैब्स भी बना लिए। यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, होपफुली आ जाए टैब्स, आ गए, है ना? तो यहाँ पे मेरे दो ऑब्जेक्ट्स बन गए। मैं टेलीविजन पे आता हूँ, एक टेलीविजन का कोई नाम बता सकता है मुझे? अभी शायद MI का थोड़ा सा अच्छा चल रहा है, MI 43 इंचेस, ये मेरा फर्स्ट टीवी हो गया, 43 इंचेस, 43 इंचेस जस्ट अ नेम। यहाँ पे आपको सेव भी कर सकते हो और आप सेव न्यू भी कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, रिकॉर्ड सेव हो जाएगा और नया रिकॉर्ड बनाने के लिए ये फिर से स्क्रीन ओपन हो जाता है, तो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। दिस टाइम यूजिंग सेव एंड न्यू, है ना? देन वी विल हैव सैमसंग टीवी और उसके पार्ट्स अलग होंगे। देन वी हैव वन प्लस टीवी, करें, वन प्लस टीवी। ओके, नाउ 3 TVs आर इनफ, है ना? You go to the television. Now you see there are the 3 television sets we have. Now let's create some parts in televisions. Okay, so television parts. Let's create a new first part, that is for the MI screen 43, है ना? तो ये कौन सा पार्ट है? MI, मतलब MI की टीवी के लिए ये स्क्रीन 43 इंचेस का है ना? उसके बाद क्या होगा,
7 न्यू, उसके बाद MI का फिर से एक और पार्ट डालते हैं, स्क्रीन डाल दिया, मदरबोर्ड, और इंटरनल पार्ट्स ऐसे मैं एक डाल देता हूँ, MI इंटरनल टीवी पार्ट्स, है ना। तो ये एक और हो गया। चलो मैं सैमसंग के लिए एक और पार्ट्स 2-4 पार्ट बना लेता हूँ, सैमसंग टीवी स्क्रीन, सिंपल वन, है ना। और देन सैमसंग इंटरनल पार्ट, काफी है, अभी वो MI का वन प्लस का छोड़ देते हैं, बस हो गया, इतने पार्ट्स हमारे लिए काफी है। तो हमारे पास 4 पार्ट्स है और 3 टेलीविजन सेट्स है ना। तो एक मैं यहाँ पे टेलीविजन भी लेके आता हूँ, ये थोड़ा सा हट जाता है एक के बाद एक, है ना। तो यहाँ पे हमें अभी आप एक अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ वन प्लस टीवी, तो मुझे यहाँ पे रिलेटेड में कुछ दिख नहीं रहा है, और मुझे ये भी नहीं पता है कि ये टीवी से रिलेटेड पार्ट्स तो प्रेजेंट है, लेकिन मुझे अगर मैं वन प्लस टीवी ओपन करता हूँ या फिर मैं कोई भी एक टेलीविजन ओपन करता हूँ सैमसंग, तो मुझे सैमसंग जो रिलेटेड पार्ट्स है वो यहाँ पे दिखनी चाहिए, है ना। जैसे अकाउंट के रिलेटेड में कॉन्टैक्ट और अपॉर्चुनिटी दिखते हैं, है ना। तो वन अकाउंट मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, सो इन द सेम फैशन वन टेलीविजन एंड इट्स अ मल्टीपल रिलेटेड पार्ट्स, है ना। तो इस टाइप अगर अगर आपको ऐसे टाइप का रिलेशन इंप्लीमेंट करना है, whenever you want to implement one to many relationship, then you have to create a lookup fields. Okay, mark these words. So whenever you want to create a one to many relationship between the two objects, that is one television, multiple television parts, then you have to create a lookup field on your many side of object. That is important. Okay. सो आपको एक लुकअप टाइप का फील्ड बनाना होता है जो आपके मेनी साइड पे ऑब्जेक्ट्स है ना, जैसे टेलीविजन पार्ट्स मेनी साइड पे है, या फिर स्टूडेंट एंड स्कूल है, तो स्टूडेंट हमारा मेनी साइड पे है, एक सिंगल स्कूल मल्टीपल स्टूडेंट, तो हमें लुकअप फील्ड जो होता है ना वो स्टूडेंट साइड पे बनाना होता है। या फिर इस केस में टेलीविजन एंड टेलीविजन पार्ट्स है, तो हमें टेलीविजन पार्ट्स पे लुकअप टाइप का फील्ड बनाना होता है ना। नाउ लेट्स गो टू दैट एंड लेट्स क्रिएट दैट, है ना। So go to object manager. So what's our many side? Television parts, है ना. So let's search for that object, television parts. Go to fields and relationship, correct? And create a new field. So now remember, I told you do not touch this field and just practice yesterday these type of fields only. Now here is the first one that we are learning today is the lookup relationship. Creates a relationship that links the object to another object in a one to many relationship, है ना। तो हमें पहला फील्ड बनाना है वो है लुकअप रिलेशनशिप। गोल्डन रूल ये है कि आप हमेशा लुकअप फील्ड जो है वो मेनी साइड पे जो ऑब्जेक्ट है ना उसी पे बनाओगे। अगर आपने वन साइड पे जो है उस पे बना दिया तो पूरा सिस्टम उल्टा हो जाता है। तो उसका मीनिंग ये हो जाएगा एक पार्ट एंड मल्टीपल टेलीविजन, है ना, एक टीवी स्क्रीन एंड मल्टीपल टेलीविजन, ऐसा पूरा रिवर्स हो जाता है। तो ऐसे नहीं करना है। टेक्निकली जो भी मेनी साइड पे ऑब्जेक्ट है, वन टू मेनी है ना हमारा, तो मेनी साइड पे जो ऑब्जेक्ट है उसी ऑब्जेक्ट पे हमें ये पार्ट्स बनाने हैं, सॉरी लुकअप फील्ड बनाना है ना। तो इन अवर केस it's a one to many, it's a television and television parts. So in our case we are creating a lookup field on a television parts. So go to the fields and relationship, let's select a lookup relationship. Okay, that's it. Click on next. Okay, now this is important, choose the related object. Now what's the related object over here? Where we want to connect. Where we want to connect, makes sense. And where we wanted to connect? Television. Television, definitely television, simple one, this one, correct. Just click on next. That's it. Just the two step, correct. So even Salesforce give you the name also, correct. You see this, I haven't typed in that, written that. Salesforce auto populated that, correct. Just click on next. Just the step where you need to select the object. Click on next. Click on next. Save. That's it. You're done with this, correct. Now refresh. Now refresh. Now, correct. Now here, let's go to the televisions. Correct. Let's open Samsung TV. But you go to the related. You see this, at least television parts is coming.
Correct. Now here existing record, so whenever you create a lookup field after your record creation, मतलब आपके पहले existing records है, उसके बाद अगर आप fields बना रहे हो तो वो existing record जो है present already system में वो automatically link नहीं होते, क्योंकि Salesforce के कैसे समझेगा कि सैमसंग टीवी के साथ सैमसंग का ही स्क्रीन लिंक करना है. इट्स अ ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल थिंग. सेल्सफोर्स या फिर कंप्यूटर को ये समझ में नहीं आता, हमें ये समझाना पड़ता है. तो उसके लिए हमें रिकॉर्ड्स को एडिट करना पड़ेगा. आप क्या कीजिए, यहाँ पे जाइए, टेलीविजन पार्ट्स में जाइए. अब ये क्या है, सैमसंग टीवी स्क्रीन. आप यहाँ पे जाइए, आपको टेलीविजन दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको आप एडिट कीजिए और आप कौन से टेलीविजन के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा. तो सैमसंग का टीवी स्क्रीन है, तो सैमसंग की टीवी के साथ लिंक कीजिए, है ना. ये एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स के लिए है. ऐसे आपको लिंक करना पड़ेगा, तभी आप अगर सैमसंग टीवी पे क्लिक करोगे तो आपको रिलेटेड में उसके पार्ट्स दिखना स्टार्ट हो जाता है. लेकिन अभी हम क्या करते हैं ना, सपोज हमने नया फ्रेश फील्ड बना लिया है, हमारे पास कोई सिस्टम में रिकॉर्ड इमेजिन कीजिए, इमेजिन नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे जाता हूँ टेलीविजन पे, इस सबको डिलीट कर देता हूँ. यहाँ पे डिलीट का बटन नहीं है, अरे यार एक एक डिलीट करना पड़ेगा फिर. जस्ट टू गिव यू द अंडरस्टैंडिंग, हाँ, मैं पहले के रिकॉर्ड्स को भी कनेक्ट कर सकता हूँ या एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को भी कनेक्ट कर सकता हूँ. तो टेलीविजन के पार्ट्स मैंने टेलीविजन डिलीट कर दिया. लेट मी डिलीट द टेलीविजन पार्ट्स एज वेल. यार यहाँ पे डिलीट होना चाहिए था बटन कहीं पे. Just I'm deleting the existing records, huh? Just to show you from scratch. There is no meaning for that. Just to show you the examples. Okay. Now, अभी आप देख सकते हो मेरे पास कोई टेलीविजन नहीं है, कोई भी टेलीविजन का पार्ट नहीं है ना. तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा ना, पहले हमें कुछ टेलीविजन बनाने पड़ेंगे, और जब भी आप कोई टेलीविजन बनाओगे और उसके बाद आप उसके टेलीविजन के पार्ट्स बनाओगे, पहले पेरेंट आता है, बाद में चाइल्ड आता है ना. जैसे पेरेंट टेलीविजन है और टेलीविजन पार्ट्स उसके चाइल्ड्स है, तो मतलब वन साइड हमारा टेलीविजन है, मेनी साइड उसका टेलीविजन पार्ट्स है. तो हमें पहले टेलीविजन बनाइए और बाद में टेलीविजन पार्ट्स को उनके साथ लिंक कीजिए. न्यू, so one more time, Samsung TV, save and new. I'll just take a 2 example and MI TV. That's it. I guess this is enough. है ना, 2 टेलीविजन से. अभी आप नए पार्ट्स बनाओगे, मोर पे जाइए, click on television parts and then create the new part, and television parts is Samsung screen, है ना. आप यहाँ पे आइए, तो उसी सेम टाइम सेल्सफोर्स आपको ऑप्शन दे देता है यहाँ पे कि आपको किस पेरेंट के साथ या फिर किसके साथ आपको लिंक करना है. समझ में आ रहा है. तो वो जो रिलेटेड में आता है वो ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाता है. सेफ, है ना. तो टेलीविजन पार्ट्स, दैट इज गो टू द मेनी साइड, दैट मींस ऑन योर मेनी साइड, click on new and then give a new part, that is MI screen, and here you can select with which TV you want to go, that is MI TV. करेक्ट. सो ये पूरा लिंक हो जाता है. तो अभी आपको क्या करना है, अगर आपको रिलेटेड लिस्ट में देखना है, टेलीविजन पे जाइए, एक आधा टेलीविजन ओपन कीजिए, सैमसंग टीवी में जाइए, उसके रिलेटेड में देखिए एक पार्ट अवेलेबल है, दैट इज सैमसंग स्क्रीन. तो ये रिकॉर्ड्स एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं, है ना. तो अभी आपको क्या करना है, अगर आपको कोई नया स्क्रीन ऐड भी करना है तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो. तो देखिए पेरेंट ऑटोमेटिकली आ चुका है यहाँ पे, आपको चेंज नहीं करना है. यहाँ पे आपके क्या कीजिए, सैमसंग का स्क्रीन आ गया, आप सैमसंग इंटरनल पार्ट्स ऐसे एक ही डाल दीजिए, है ना. मदरबोर्ड, ट्रांसफॉर्मर जो भी है उनको कंबाइन मैंने एक ही नाम दे दिया. यहाँ पे सेव कीजिए, यहाँ से रिलेटेड पार्ट्स आ जाते हैं. तो आप क्या कर सकते हो, आप पेरेंट पे जाइए, उसके रिलेटेड में जाके आप पार्ट्स ऐड कीजिए. ये एक ऑप्शन है, मतलब आप यू विजिट द पेरेंट ऑब्जेक्ट, दैट मींस यू विजिट द वन साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज टेलीविजन, गो टू द रिलेटेड and create it some many parts. Correct. Else what you can do, you go to the many parts and click on new, and at the time of creation of your many side you can select your parent, that is one side, है ना. मतलब दोनों साइड से वाइस वर्सा पॉसिबल है.
आप टेलीविजन पे जाके रिकॉर्ड इंसर्ट करते टाइम पे उसका टीवी सिलेक्ट कीजिए, या फिर टीवी पे जाइए और उसके रिलेटेड में जाके उसका पार्ट सिलेक्ट कीजिए। दोनों साइड से पॉसिबल है। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, ईदर यू गो टू द टेलीविजन, open your television, go to your related and select your many parts, that is one television, multiple parts, है ना? This is also possible. This is the one side. That means this is a one way. Else you can go to the television parts, and at the time of creation of your television parts, correct, you can select your television. That's your TV. So this is we call as a one to many relationship, or this is we call as a lookup relationship. And this is very, very important. Huh? Don't take this easy, because your half of the interview can be done on this. Okay, so when we have to connect a object, we just have to fill that lookup part. You That- just have to create a lookup type of field. Okay, that default thing. And where you are going to create that field on a many side. That is very, very important. मतलब आपको दो ऑब्जेक्ट्स पे कनेक्ट करना है, करेक्ट? Right. मतलब तो आपको क्या करना पड़ेगा? लुकअप फील्ड बनाना पड़ेगा। ये आपके पास पहला ऑप्शन है, लेकिन आप लुकअप फील्ड कहाँ पे बनाओगे वो इंपॉर्टेंट है। वन साइड पे या फिर मेनी साइड पे? मेनी साइड पे। मेनी साइड पे। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसके लिए वर्क अराउंड नहीं है ना? जैसे थोड़े दिनों को आपको याद करना है, बाद में ये ऐसे क्या बोलते हैं, हैबिट हो जाती है। Okay. Many side and one side is many side. This object one where just we have one option. I mean record one. नहीं नहीं, आपको क्वेश्चन नहीं समझा। Just a television part is the many side and television is the one side. Is that what you Correct. mean by many side and one side? Exactly. That means Okay. one side can contains the multiple parts, so that television screen plus television internal Right. parts plus power adapter plus equals to your television. है ना? Got it. तो one school, multiple students. One television, it's a multiple television parts. Right. One college, multiple student. One university, multiple subject. है ना? Right. तो ऐसे अगर आपको कनेक्ट करना है तो आपको दो ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, वो ऑब्जेक्ट्स में रिकॉर्ड्स बनाने हैं और उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है। Always तो connect मिसमैच with it. मत करना, Lookup. मिसमैच मत करना। हाँ हाँ, Lookup will always connect to the child part. yes, lookup will be always has to be created on the child side. Right. है ना? तो ऐसे मत करना कि सैमसंग टीवी, यू हैव क्रिएटेड सैमसंग टीवी एंड यू आर लिंकिंग द एमआई स्क्रीन, एमआई अडाप्टर, है ना? तो वो डेटा गलत हो जाता है। इस केस में यू आर नॉट डूइंग टेक्निकली समथिंग रॉन्ग, यू आर क्रिएटिंग अ रॉन्ग डेटा और रॉन्ग डेटा कनेक्शंस। उसके लिए हम कुछ अवॉइड नहीं कर सकते। अभी ये तो ह्यूमन मिस्टेक है ना। आप एमआई की टीवी में सैमसंग की स्क्रीन डालोगे तो वो ह्यूमन मिस्टेक है। आपको दो स्क्रीन दी गई, एमआई भी दी गई और सैमसंग दे दी, तो आप कौन सा स्क्रीन डालोगे? जो मैच हो रहा है वही डालना पड़ेगा। अगर आप रिवर्स डालोगे, उल्टा डालोगे, तो वो तो गलती है ना? वो डेटा का प्रॉब्लम है। एनीवेज, आई होप you get something out of this. Don't worry, we are going to create hundreds of lookup fields moving ahead, but ये first session है, आपको ये समझ में आना चाहिए, है ना? तो hardly request you that please go through the recordings today, है ना, before coming to the tomorrow's. Anyways, tomorrow we have the holiday. Oh, it's a Friday today. Anyways, so you have the 2 days now, Saturday and Sunday, correct? So go through the recordings very thoroughly and try to create your own objects. Do not use my object, that is television, car, bike. Take your own scenarios, but take it simple one. Okay, don't go in a very complex scenarios. Take a very, very simple, a mobile parts, and then car parts, student and college, like a simple scenario, so that no more complications will be created. Initially, take a one step at a time. Take simple scenario and try to create multiple objects and a lookup fields on it and try to connect them. Practice well, please. Okay, before coming to the Monday's class, because on a Monday, we are going to introduce a new type of field, that is a master detail field. It's the next version of lookup. Okay, so if still anyone have any questions today in their mind? Oh, fine, sir. Okay, if you have any question, you can stay in a class, you can ask me. If you don't have any question, please feel free to drop off and continue. Okay, thank you so much everyone for the joining. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Bye. Bye. Bye bye.
everyone.